बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो जी स्टूडेंट्स, अब बायो का पेपर जो है 9th क्लास स्टूडेंट्स का नेक्स्ट इंग्लिश के बाद है, उसके लिए इंपॉर्टेंट गेस्ट पेपर्स हैं जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम्स के लिए। स्टूडेंट्स, सबसे पहले एमसीक्यूज हैं। एमसीक्यूज यहाँ पे आपने वन बाय वन इनको पढ़ लेना आंसर्स के साथ। वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं ये, इनको आपने अच्छी तरह से कर लेना है। कि जो स्टूडेंट जिन्होंने नहीं किया वो एमसीक्यूज वगैरह कर लें तो वो उनकी तैयारी बिल्कुल नहीं है, तो वो यहाँ से पास हो सकते हैं। इन एमसीक्यूज को आपने वन बाय वन पढ़ना है अच्छी तरह से स्टूडेंट, इनको रीड आउट कर लेना है। स्टूडेंट वन बाय वन को अच्छी तरह से आपने पढ़ना है। एमसीक्यूज को जितने भी है 100 या जितने भी है, एमसीक्यूज वेरी इंपॉर्टेंट है, बार बार रिपीट होने वाले हैं बोर्ड के एग्जाम्स में। तकरीबन 100 एमसीक्यूज हैं ये जो यहाँ पे मुलफिल किया हुआ इसका आंसर है सही। 100 एमसीक्यूज है। स्टूडेंट सब्जेक्टिव आ जाता है यहाँ पे, इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस वगैरह स्टूडेंट। शॉर्ट क्वेश्चन सबसे पहले इंपॉर्टेंट, पहला शॉर्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, डिफाइन सोमैटिक सेल्स। पहला शॉर्ट क्वेश्चन है सॉरी, व्हेन एंड हु प्रेजेंटेड द इंड्यूस्ड फिट मॉडल। दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन है, डिफाइन सोमैटिक सेल। तीसरा शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज मीन्ड बाय क्रॉसिंग ओवर। चौथा शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज मीन्ड बाय माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, गिव एग्जांपल्स। पांचवा शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज मीन्ड बाय पेरिकार्डियम। छठा शॉर्ट क्वेश्चन है, डिफाइन कैटाबोलिसिज्म। सातवां शॉर्ट क्वेश्चन है, राइट द डेफिनेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस, राइट इट्स इक्वेशन। आठवां शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज मीन्ड बाय एक्टिवेशन एनर्जी। नौवां शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज मीन्ड बाय ऑप्टिमम टेम्परेचर, गिव एनी सूटेबल एग्जांपल। फिर शॉर्ट क्वेश्चन है 10, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन काइस्मेटा एंड क्रॉसिंग ओवर। फिर शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज मीन्ड बाय नॉन disjunction of chromosomes, define transpiration and right sources of transpiration। फिर डेफिनेशन है 13 वाला, define macromolecules, give two examples। how does a disjunction differ from a non disjunction, try the difference between alcoholic and lactic acid fermentation, what is meant by source and sink, what is meant by leukemia, how it is treated, right to purposes of classification, define active transport and osmosis, who introduced the lock and key model, define it, and the definition of lysosomes, what is meant by denaturation of enzyme, what are called transpiration pull, what is meant by angina pectoris, write down its symptom, what is biosphere level, what are the qualities of a good hypothesis, what is meant by reduction, what is meant by biodiversity, why the principles of cell theory, name the two major stages that occur during mitosis, state the effect of temperature on the rate of enzyme action, name the four limiting factors of photosynthesis, what is the difference between bolus and what is 34 वाला शॉर्ट क्वेश्चन है, what is meant by systematic circulation। उसके बाद स्टूडेंट ये शॉर्ट क्वेश्चन, स्टेट द डिफरेंस बिटवीन आर्टरीज एंड वीन्स, राइट टू बेनिफिट्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी, डिफाइन binomial nomenclature, what is meant by active site in an enzyme, define ATP and write its function inside the cell, define aerobic and anaerobic respiration, what is meant by horticulture, write the names of the famous book of Jabir bin Hayyan and Abdul Malik Asbai, write the names of the famous books of Jabir bin Hayyan and Abdul Malik Asbai, write the achievement of AFA King, define meiosis, in which cells does it occur, define cofactor and coenzymes, how light intensity affect the rate of photosynthesis, differentiate between cohesion and adhesion। फिर नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज मीन्ड बाय ल्यूकीमिया, डिस्क्राइब द सिम्टम्स ऑफ ल्यूकीमिया। फिर नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है, डिफाइन हार्ट बीट, व्हाट इज मीन्ड बाय सबस्ट्रेट,
फिर नेक्स्ट शॉर्ट को राइट द डेफिनेशन बायोटेक्नोलॉजी, डिफाइन जेनेटिक्स एंड बायोलॉजी, स्टे टू scientific services of Bolicina, briefly describe the tissues level, what is scientific name of mustard plant, how are deductions made, give an example, differentiate between control and experimental group, what is theory, what is difference between theory and law, उसके बाद स्टूडेंट है व्हाट इज meant by bioinformatics, what are the major aims of taxonomy and systematics, write the classification of pea plant, write the properties of kingdom fungi, write briefly about eucalyptus, what is meant by magnification and resolution. Next short question है 66, define plasmodium, describe the structure and function of ribosomes, differentiate between ringing and malignant tumors, right? Types of reproduction, what is the difference between prosthetic group and coenzyme, right? The names of four enzymes, define oxidation and reduction, describe the structure of ATP molecule, what is meant by glycolysis, right? Four sources of protein, state two functions of liver, write the functions of roots in plants, differentiate between cardiac diastole and arterial diastole, differentiate between soluble and insoluble dietary fiber, differentiate between botany and zoology. उसके बाद नेक्स्ट टेस्ट 100 है, ये भी शॉर्ट क्वेश्चंस भी, राइट एनी टू characteristics of kingdom Monera, why viruses are not included in any of the following kingdoms, any of the five kingdoms, write a brief introduction of Hobra Bustard and Marco Polo sheep, differentiate between smooth and rough endoplasmic reticulum, what are chromoplasts, how do they help in pollination, write bioenergetics and role of ATP, describe the functions of xylem and phylum, what is meant by granulocytes, write their functions, write the disadvantages of dengue fever, what is anemia and why does it occur, 91 what is the human heart called a double pump, 92 describe the difference between species and habitats, 93 write the names of groups of biomolecules. Next, define biological method, differentiate between quantitative and qualitative observation, write observations about malaria, which are biological problems that use mathematics, what causes atherosclerosis, differentiate between angioplasty and bypass surgery. लास्ट शॉर्ट क्वेश्चन है राइट एनी टू डिफरेंस बिटवीन एनिमल एंड प्लांट सेल। फिर स्टूडेंट आ जाते हैं लॉन्ग क्वेश्चंस, ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है स्टूडेंट। एक्सप्लेन द फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन, डिस्क्राइब इन डिटेल द स्टेजेस ऑफ phase of mitosis, compare eukaryotic and prokaryotic cells, write detailed notes on the function of liver in human, describe the role of light and chlorophyll in plants, write a note on use of enzymes, write the mechanism of action of enzymes, describe in detail the various stages of the light reaction, explain any four branches of biology, define endangered species and explain it with two examples, write a note on the importance of disadvantages of fertilizers, state any three effects of malnutrition in humans, explain in detail the main reasons for malnutrition, explain the importance of transpiration, write a note on nutrients transport implants. 60 वाला short question है, long question है स्टूडेंट, define organ and organ system level with examples, write a note on two kingdom classification, describe the structure of cell wall, और last long question है स्टूडेंट, explain xylem and phloem tissues। तो ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, आप इनको अच्छी तरह तैयार करना है, इनमें से जो चीजें आपको आती है उनको अच्छी तरह रिपीट करना है। तो स्टूडेंट इसमें से इंशाल्लाह 80-90% पेपर आने का पूरा चांस है। 100 शॉर्ट क्वेश्चन, इन एमसीक्यूज को भी पढ़ लेना है जो ऊपर थे स्टूडेंट 100, और ये लॉन्ग क्वेश्चन है। तो
अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।